previous time I started equations of motions. Clear? I started there. First equation, that is V is equal to U plus AT. U plus AT. In this equation I told you V is equal to what? Final velocity. U is equal to initial velocity. A is equal to acceleration. T is equal to time. Okay, I discussed with you all two related terms with initial velocity and final velocity. I told you that initial velocity can be equal to 0 and initial velocity cannot be equal to 0. Okay, means about this initial and final velocity you can see in the previous video. Initial velocity can be, final velocity can be equal to 0 and final velocity cannot be equal to 0. Okay, and I told you, I discussed graph there, that is in this side we will take velocity, in this side we will take time period. Okay, because for solving all three equation of motion we will take only velocity time graph. What? Velocity time graph. Listen here. So I told you that this is a straight line equation. Here at all points velocity will remain constant, time is changing. Time is changing. So in this by this graphical representation we got their value. Slope means acceleration equal to what? 0. Okay. Now for solving or getting, we will take a help of which things? Velocity time graph, or second thing is what? Slope method. Yes, slope point I will discuss here. All three equation of motion I will discuss by the graphical method. Which method? Graphical method. Okay, now first of all you have to keep in your mind graphical diagram. Okay, before solving the equation in the examination also you have to draw graph, because roughly you can draw on the paper only. Graph paper no required there for drawing the graph. What one thing, listen carefully. For drawing the graph, what? For drawing the graph you have to take a rough paper. On the paper you have to draw graph between velocity and time only. Velocity and time only. First of all I am explaining the graph. Later equation we can get easily, but basic thing is there, graph value. You have to keep in your mind graphical representation. Okay, just I am going to explain one thing. Listen, later everything related to the graph I will explain. Okay, in this side we will take time, in this side we will take a velocity. Okay or not? Okay. Or I told you that initial velocity can be equal to 0 or initial velocity cannot be equal to 0. Final velocity can be equal to 0. Final velocity cannot be equal to 0. U represents here initial velocity, V represents here final velocity. Understood? Listen carefully. So this is that point where on this line we will show on x-axis time is independent term. So on x-axis we will draw here time period only. Velocity is dependent term, so along y-axis we will take a velocity term only. Okay, so listen carefully one thing. This is that point where time is 0 and velocity also 0. Means at this point both things are 0. At this point both things are 0. At this point both things are 0. Listen now. If I am taking here some point at this point, I am selecting this point here. मैं अगर यहाँ पे एक पॉइंट सिलेक्ट कर लेता हूँ, पहले ही बोल दिया मैंने इस लाइन पे वेलोसिटी है, इस लाइन पे क्या है? वेलोसिटी है. अगर मैं इस लाइन पे कोई भी पॉइंट सिलेक्ट कर लूँ तो वो पॉइंट मेरा वेलोसिटी रहेगा, और इस लाइन पे कोई भी पॉइंट मैं सिलेक्ट कर लूँ तो इस पॉइंट पे वो मेरा टाइम पीरियड रहेगा. ओके, तो सी हियर, अगर मैं ये पॉइंट सबसे पहले, मैंने आपको पहले बोला है कि मैं सबसे पहले ये पॉइंट यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ से मैं सबसे पहले कौन सा पॉइंट सिलेक्ट कर रहा हूँ? ये पॉइंट सिलेक्ट कर रहा हूँ. मैंने पहले बोली थी कि भाई वी हैव 3 पॉइंट्स A, B एंड C.
if train is starting from A point, so we can say here initial velocity can be 0, u can be equal to 0, but now here this train will not stop at B point, so on that point train will show always motion. So we can say here if train will be in the motion, so body velocity will not be equal to 0. So we can, when you start to see the board object, तो on that time you can say this will be the initial velocity. तो मैं यहाँ पे ये पॉइंट बोल रहे हैं कि ये मेरा वो पॉइंट है जहाँ पे मैं इनिशियल वेलोसिटी सेलेक्ट कर रहा हूँ, और ये पॉइंट मेरा यहाँ से यहाँ तक, अगर मैंने पहले यहाँ से मान ली बॉडी मोशन में है, कुछ ना कुछ उसका वेलोसिटी है, तो यहाँ से जो बॉडी का वेलोसिटी रहेगा वो बॉडी का वेलोसिटी क्या रहेगा, u रहेगा. What will be here? This is the velocity, that is what, u. बॉडी का वेलोसिटी क्या रहेगा, u. मैं ले लेते हैं अभी इनिशियल वेलोसिटी बॉडी का a के ले लिया 30, तो इनिशियल वेलोसिटी हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी. तो हम इनिशियल वेलोसिटी को ये ऐसे ड्रॉ कर देते हैं. ओके और नॉट ओके. तो ये मेरा इनिशियल वेलोसिटी लाइन है. ओके और नॉट ओके. अब ये वो पॉइंट है, देखो ये पॉइंट मेरा ए पॉइंट है. आई कैन से दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी. आई एम स्टैंडिंग एट पॉइंट बी एंड ऑब्जर्विंग द ट्रेन. तो एट दिस पॉइंट बॉडी रिमेन्स इन मोशन. तो आई कैन से दिस विल बी द इनिशियल वेलोसिटी एंड इनिशियल वेलोसिटी गिव्स अस सम वैल्यू, एनी फिक्स या पर्टिकुलर वैल्यू. ओके और नॉट ओके. तो सेम थिंग, वन थिंग लिसन, अब बॉडी इज मूविंग फ्रॉम बी टू सी. तो आई कैन से बॉडी वेलोसिटी हियर हाउ मच, 50. तो बॉडी मेरे सामने से निकला, तो मान लेते हैं बॉडी का वेलोसिटी बढ़ रहा है, तो इट कैन बी 51, 52, 53, 54, इट कैन बी एनीथिंग एल्स. बॉडी का वेलोसिटी बढ़ता चला जा रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, टाइम तो हमेशा बढ़ेगा ही. लेकिन मैंने शुरुआत में जब मैं यहाँ पे खड़ा था तो मेरा टाइम 0 था, तो बॉडी का वेलोसिटी कितना था, 50 था. तो इनिशियल वेलोसिटी कितना, 50. लेकिन हम यहाँ पे u ले रहे हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी कितना हो गया बॉडी का, u हो गया. तो यहाँ से यहाँ तक का जो बॉडी का वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी है, और इनिशियल वेलोसिटी बॉडी का क्या है, उसके बाद देखिए वेलोसिटी बढ़ रहा है, 51, 52, 53, एंड अलोंग विद इट टाइम पीरियड ऑल्सो विल इंक्रीज. तो आई कैन से हियर, लिसन वन थिंग, देखो वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग. अगर मैं इसको देखो ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं, मैंने आपको पहले बताया था यूनिफॉर्म ग्राफ, आप देख लेना. देखो अगर मैं वेलोसिटी को बढ़ा रहा हूं, देखो ध्यान से देखना इधर भाई, बी केयरफुल. देखो मैंने वेलोसिटी को बढ़ाया, वेलोसिटी देखो ए, देखो ए यहां पर अगर मैं कोई पॉइंट ले यहां पर, तो यहां पे कुछ और होगा. तो ये पॉइंट ले तो ये और ऊपर चला गए, ये पॉइंट ले ये थोड़ा और ऊपर चला गए. तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे हर एक पॉइंट पे जो आपका वेलोसिटी है वो बढ़ रहा है. वेलोसिटी क्या है, इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है. तो सेम थिंग अगर मैं इसको नीचे मिलाऊं, यहाँ पे टाइम पीरियड कुछ और रहेगा, इसको मैं थोड़ा सा नीचे मिलाऊं, यहाँ पे तो मैं बता ही देता हूँ. देखो अगर मैं कोई भी एक पॉइंट सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये पॉइंट सेलेक्ट, देखो यहाँ पे तो देखो अगर मैं ये पॉइंट सेलेक्ट करूँ, तो यहाँ पे मान लेते हैं मेरा वेलोसिटी कितना, मान लेते हैं u है. कितना है मेरा वेलोसिटी, यहाँ पे वेलोसिटी मेरा कितना है, u है. हाउ मच इज देयर, u. अगर मैं इसको u मान लेता हूं, अगर मैंने वेलोसिटी यहाँ पे u माना, तो टाइम पीरियड यहाँ पे कितना है, 0 है. अगर मैं इस पॉइंट को मान लेता हूँ ए, ये पॉइंट मान लेता हूँ, ये अगला पॉइंट, तो इस पे देखो सम वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड इंक्रीज, तो अलोंग विद इट वेलोसिटी ऑल्सो इंक्रीज. देखो यहाँ से थोड़ा सा ऊपर चला गए, तो वेलोसिटी भी देखो कुछ बढ़ गया है. अब ये मैं एक और पॉइंट, आई एम सेलेक्टिंग न्यू पॉइंट, तो ऑन दिस पॉइंट व्हाट विल हैपन, तो सेम थिंग, सम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी ऑल्सो गोइंग टू इंक्रीज. Okay, then along with time period also increase. Okay, third point I'm selecting here. तो on this point also same thing I'm also following. तो यहाँ पे भी मेरा क्या है, मेरा वेलोसिटी बढ़ रहा है, और यहाँ पे भी मेरा टाइम पीरियड बढ़ रहा है. तो कहने का मतलब क्या है, सिर्फ ये एक वो पॉइंट है जहाँ पे मेरा वेलोसिटी, देखो यहाँ पे अगर मैं इस पॉइंट को क्या मान लेता हूँ, 3 मान लेता हूँ, तो इस पॉइंट को मैंने 3 माना, तो यहाँ पे भी 3 रहेगी वेलोसिटी, यहाँ पे भी 3 रहेगी, यहाँ पे भी 3, बट टाइम पीरियड बढ़ रहा है. लेकिन जो मेरी ये लाइन है, स्लेंट लाइन है, तो इस लाइन के ऊपर देखो लाइन ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, तो मेरा वेलोसिटी भी साथ के साथ बढ़ रहा है, और साथ के साथ मेरा टाइम पीरियड भी बढ़ रहा है. तो आई एम सेलेक्टिंग हियर 2 points. One is there constant velocity. This velocity can be initial velocity. After that, I'm increasing step by step this initial velocity. So I can say initial velocity going to increase. Along with it, I will get a second graph. So I'm taking here 2 graph step. This is 1 and this is 2. You have to keep these things in your mind. ओके और नॉट ओके. अब एक बात सुनिए, मान लेते हैं मैं अभी बॉडी यहीं तक ही गया, बस मैं बॉडी को बी से सी की तरफ जा रहा है, बीच में एक पॉइंट पी आ गया, तो जैसे बीच में पी पॉइंट आया तो मैं बॉडी को पी पॉइंट तक ही देख पाया. तो सिर्फ आई कैन ऑब्जर्व द वेलोसिटी ऑफ बॉडी अप टू द पॉइंट टिल द पॉइंट पी ओनली, up to which point, P point only. So I can say this is the P point. So this point will give us final velocity. So I can say this will be the final velocity. This will be the final
velocity. Okay or not? Okay. Now I'm drawing here clear cut diagram of here for both things, initial velocity and the uniform velocity. Okay, we got this graph here. Clear? So I can say this is the time period, this is the velocity. Up to here I can say what is this? This is initial velocity. What is this? This is initial velocity. Now we are going at last point where will be the final velocity. So I can say this point, P point, I can say this point is the P point where we will get the final velocity. Okay, now I'm meeting this line here. Understood or not? So I can say this point will gives us final velocity. Then I can say up to here to here, this will be the final velocity. Understood or not? Understood or not? Okay, so up to here I'm observing the time period, so I can say till this point this is the time period. This is the time period. Means I can observe the train for 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes to till that last point where we'll be able to observe the object. To observe, I'm able to observe the object till the last point. I'm just observing total time till that point is the 5 minute, 10 minute, 15 minute, anything else. So I can include this point. This will be our total time interval. Okay or not? Okay. तो one thing listen. मैंने आपको पहले ही बोला है कि जो ये हमारी ऐसे ये वाली लाइन होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, इसका स्लोप क्या बताया था मैंने? 0. इस लाइन का स्लोप क्या बताया था? 0. लेकिन इस लाइन का स्लोप 0 नहीं होगा. इस लाइन का स्लोप 0 नहीं होगा. इस लाइन का स्लोप मैंने आई टू एक्सप्लेन इन द क्लास ऑल्सो. आई विल सिलेक्ट 2 पॉइंट्स फॉर गेटिंग द स्लोप वैल्यू. फॉर गेटिंग द स्लोप वैल्यू सिंपली आई एम राइटिंग हियर स्लोप इज इक्वल टू व्हाट? y axis divide by x axis. Okay, this is the slope. Yeah, I can, if I have not a point, if point is not given, then simply you can take here y axis upon the x axis. If point is given, then you can take y2 minus y1 divide by x2 minus x1. Clear? One thing listen here, I can say this line slope will be 0. I told in the last time, in the last video, you can see there how this line gives us slope value equal to 0. This time I will not explain, but I'm explaining here. This is the slant line. I can say this is the slant line. So this line has there some slope value. Then how we'll find out the slope value? We will find out the slope value by y axis upon x axis, y2 minus y1 upon x2 minus x1. Okay or not? Okay, one thing listen. अब हम क्या, I'm saying here it has a slope. It has a slope or not? तो इसमें मैं इस लाइन को नहीं लूंगा. तो कहने का मतलब इसके नीचे वाला एरिया आई विल नॉट इंक्लूड, नॉट इंक्लूडेड. ओके और नॉट? ओके, बट आई विल इंक्लूड स्लैंट लाइन ओनली. तो दैट मच एरिया विच आर प्रेजेंट अंडर दिस लाइन, I will include this area only. I will include this area only. Clear? So I can say if this line is showing a time period, so this line is equal to this line also, then I can say this is also time period. This is also time period. Second thing, up to this point to this point, so I can say up to this point to this point, that is V. So this line is equivalent to this line, so I can say this point to this point, that is what? V. Okay or not? Okay. And same thing, if this is the U, so this line is equivalent to this line, so I can say this is also U. Okay or not? Okay. Understood or not? Understood or not? You can understand easily. Okay. One thing listen, I can say this point, I can say O, A, B, C, D. Okay, I can say this point is O, A, B, C, D. Clear? So I can say what is AC? What is AC? Then AC equal to time period T. AC equal to what? Time period T. Later I will tell you why I'm taking these values here. Clear? But I'm saying here AC is equal to T. But one thing, I am taking area under AB only, because AC has not any slope, but AB has a slope because this is the slant height.
Okay or not okay? Listen carefully. AB has a slope, so I will take here only which area? A, B, C. I will not take this area under this AC. Clear? Listen here. A, B, C. What? A, B, C. I'm saying here AC is equal to the time period T. Then I will take here BC. What? BC. Ab how will I find out BC? I know that complete BD how much? BD is equal to V and CD is equal to what? U. ये टोटल लाइन अगर मेरे पास BD है, अगर इसमें से मैं CD को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो मेरा ये लाइन बचेगा नहीं बचेगी? तो आई कैन से इफ आई हैव सिंपली आई कैन से B, this point is C and this point is D. If total length is 5 centimeter and CD is 2 centimeter, then this line will be 3 centimeter or not? What will you do? Total 5 minus 2, total 5 minus U. 2 I can say, so I can say total 5 means is equal to what? BD minus what is this? CD. CD, then I will get BC. Okay or not okay? BD is equal to what? BD is equal to what? V. CD is equal to what? CD is equal to what? U. So I can say BC is equal to V minus U. V minus U. V minus U. Then I'm going to find out slope, because first equation will get by the help of slope only. Slope is equal to what? Y axis upon x axis. Or if you have points, you can select another formula, that is y2 minus y1 upon x2 minus x1. Okay, one thing, listen. This is y axis, this is x axis. So same thing you can include here. Those things which are, those lines which are parallel to the y axis, so we can say both lines are of the y axis only. Clear? Those lines which are parallel to the x axis, so I can say both lines can be as an x axis only. देखो one thing, if ये x axis है, this line is the x axis, तो एक लाइन इसी के पैरेलल है तो भी ये x axis की मानी जाएगी, एक और लाइन है वो भी x axis की मानी जाएगी, मतलब ये जो उसके पैरेलल चलेगी. ये y axis की लाइन है तो ये लाइन भी y axis की, ये अगर y लाइन y axis की है तो ये लाइन भी y axis की मानी जाएगी, और ये लाइन भी we can include as an y axis only. Understood or not? Same thing I can take in the video also, in this graphical representation also. What will you do? If this is y axis, so I can say BD also behaves like a y axis only. If AC x axis, so I can say OD also y x axis. Okay or not okay? I wrote here that y axis upon x axis, so I will take area what? A, which line I will take? A, B, C only. So B, C parallel to this y axis line, so I can say BC is behaving as an y axis only. So I can write along y axis what? BC, or this is what? AC. X axis, so x axis is what? T. So I can say AC is on x axis. अब I have both values, both मतलब functions values here. BC is equal to what? V minus U, and AC is equal to what? T. Means BC is equal to what? V minus U, and AC is equal to what? T. Okay, understood or not? One thing, listen. Y axis upon x axis. So I'm writing here equation again. Listen here. Slope is equal to V minus U upon T, and slope is equal to what? Y axis upon x axis. Okay, along y axis I am taking what is which I am taking here? Velocity. Or along x axis time period. So I can write here velocity upon time, or velocity upon time is equal to what? Acceleration. Velocity upon time is equal to what? Acceleration. Velocity upon time is equal to what? Acceleration. Okay, velocity. Now listen here. In this equation, slope is equal to V minus U upon T, and slope is equal to A. Slope is equal to A means acceleration. Understand? I told you before it that velocity times slope gives us acceleration. Okay, so both values of the slope, both values are here of the slope only.
Okay, so both values can be equivalent together to each other. So I'm writing here v minus u upon t is equal to what? A. Clear? So simply I'm taking divide by 1. I'm doing here cross multiplication. What will happen? V minus u, this t goes in another side, it become 80. Then v is equal to this u goes another side, become positive term. So I can write u is plus 80. So I can say v is equal to u plus 80. This is our first equation of motion. V is equal to u plus 80. This is our first equation of motion. So we proved here first equation of motion by which method? Slope method. Okay, hopefully you will understand. I think so. Bye. Next equation we will do in next video.